Hello friends, how are you? In this video lecture of thermodynamics, today we will see what is state function and what is a path function. In a previous lecture, we have seen about process and types of processes. आज के lecture में what is state function and what is the path function. To understand this video, watch this video till the end. अगर आपको पसंद आया तो like it, comment it, share it and subscribe it. So what is state of system? We have seen a known set of thermodynamical properties. Suppose a initial state of system है, this is the initial state of system, or this is the final state of system. And a ऐसी property which depends on only state of system, and a property which depends on only state of system, ऐसी property जो state पे depend होती है, उसकी state पे depend होती है, so उस property को क्या कहेंगे हम? That is state function. See here, ये initial state है, a initial state and a final state of the system, a final state. Suppose यहां पर टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज T1, तो यहां पर टेम्परेचर सपोज इट इज T2. T1 यानी इनिशियल टेम्परेचर, T2 यानी फाइनल टेम्परेचर. So temperature, suppose we want to calculate difference in temperature, यानी what is this? Delta T is equal to T2 minus T1. And this difference, remember जहां पर डेल्टा होता है वो क्या इंडिकेट करता है? वो स्टेट फंक्शन है. दिस डेल्टा इंडिकेट्स व्हाट? ए स्टेट फंक्शन है. एंड टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन. टेम्परेचर क्या है? ए स्टेट फंक्शन है ना. फर्स्ट we'll say about state function. So temperature depends on only initial state and final state. Pressure क्या? Pressure P1, here it will be P2. Pressure भी उसके initial state और final state पे depend होता है. यानी suppose we have to calculate delta P, change in pressure delta P is equal to what? P2 minus P1. Again ये delta क्या indicate करता है? A state function है. And a pressure is also state function. Pressure is also state function. Internal energy, और before internal energy I will take that is volume V1. इसका volume है V1, initial state का volume है V1, और here final state का volume है V2. So what is change in volume? Here delta V is equal to what? V2 minus V1. To calculate change in volume, delta, again it indicates what? It is state function, and volume is also state function. Internal energy U1, here it is U2. So what is change in internal energy? And delta U. Delta U is equal to what? U2 minus U1, and it is state function. This is internal energy. Internal energy gives free energy, that is suppose it is G1, gives free energy. So here it is, it will be what? G2. So what is change in gives free energy? Delta G is equal to what? G2 minus G1, yani it is also state function, gives free energy. Initial state की entropy, we'll consider entropy. We know that entropy is the measure of randomness or disorder of particles. So suppose entropy of the initial state is S1. इसकी final entropy क्या होगी? That is, it will be S2. So what is change in entropy? Delta S is equal to what? Delta S is equal to S2 minus S1. So it is also what? State function. It is also state function. So what is conclusion? Temperature is the state function, pressure is the state function, volume is the state function, internal energy is the state function, gives free energy is the state function, entropy is state function, and a function which depends on only initial state and final state, उसके state पे depend होती है. So that function is said to be what? State function. Now what about path function? See here, this pathway between final state and initial state, इसे हम क्या कहेंगे? That is a pathway. इसे हम क्या कहेंगे? That is a pathway. And a distance between final state and initial state, way between that is final state and initial state, it is said to be what? Pathway.
नाउ व्हाट इज अ पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है? यानी फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथवे बिटवीन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट, इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी वो उसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पाथ फंक्शन दैट इज वर्क एंड हीट, इजंट इट? पाथ फंक्शन, path function. So what is a path function? Any function which depends on what? Pathway between final state and initial state. Pathway between final state and initial state, isn't it? इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्क and heat. Work and heat. Here I will explain path function and state function by using simple example. Suppose ये किसी सिंसियर स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का घर है, isn't it? This is the house of student, ठीक है? और यहां पर स्कूल है। ये स्कूल ऐसा होता है ना, ये स्कूल है, isn't it? तो सिंसियर स्टूडेंट क्या करेगा? उसके घर से निकलेगा और सीधे स्कूल की तरफ जाएगा। इट इज लाइक दिस। स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधे घर आएगा विदाउट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। सो दिस इज लाइक अ स्टेट फंक्शन, यानी विच डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट है। ये सिंसियर स्टूडेंट के बारे में। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, उतना सिंसियर नहीं, तो वो क्या करेगा? घर से निकलेगा, इधर जाएगा उसके फ्रेंड की तरफ, फ्रेंड को लेकर वो फिर इधर आएगा, गार्डन की तरफ जाएगा, बाद में क्या करेगा? फिर इधर आएगा, फिर इधर, और बाद में स्कूल। यानी दिस इज लाइक अ पाथ फंक्शन। यानी पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन पाथवे बिटवीन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। सिंसियर स्टूडेंट क्या करेगा? घर से निकलते ही सीधे स्कूल की तरफ जाएगा, स्कूल खत्म होने के बाद सीधे घर आएगा। लेकिन दैट इज ऑर्डिनरी स्टूडेंट, उतना सिंसियर नहीं होता, इधर उधर भटकेगा, बाद में स्कूल जाएगा, स्कूल खत्म होने के बाद भी सीधा घर नहीं आएगा, इधर उधर भागेगा, इधर उधर दौड़ेगा, गार्डन जाएगा, पार्क जाएगा, isn't it? So this is like a path function. So what is state function? State function which depends on only initial state and final state. इसके एग्जाम्पल हमने देखा, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। लेकिन वर्क एंड हीट ये पाथ फंक्शन है। जहां पर डेल्टा आता है वो स्टेट फंक्शन है। वर्क के लिए हम डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखते, दैट इज सिंपली डब्ल्यू, isn't it? वर्क we write W only, and for heat we write only Q, not delta Q. So work and heat, these two are path functions which depends on pathway between final state and initial state. So this is about state function and path function. If any doubt, you put your doubt in comment box. Definitely I will get back to you. Thank you.